with you American poet Robert Frost. So he's an American poet. So his poems are very famous. You must have read his famous poem in your graduation. I hope so. The poem is Stopping by Woods on a Snowy Evening, and this is his one of the famous poems of Robert Frost. So poems which other poems are Birches, After Apple Picking, The Road Not Taken, you must have read, I think, and Fire and Ice, The Home Burial, and many others. So Birches is a very beautiful poem. Robert Frost is a nature poet. Wordsworth is a nature poet and Robert Frost is also a nature poet. But there is difference in both of these poets. Wordsworth worships nature. He always tells positive aspect of nature. But Robert Frost sees other aspect of nature. Nature is not always for the good of man. There are calamities, there is flood, and there are natural calamities. Nature can be hostile, nature can be unfriendly. Nature is not always friendly, as Wordsworth says. So Robert Frost presents beauty of nature, and at the same time he also presents another aspect of nature which is not friendly. So Birches is a beautiful poem. So we start. The poem Birches is an extended nature lyric. It is strikingly remarkable for blending subtle fact and fancy, imagination and observation. इस पोएम में आपको blending means mixture, subtle means बहुत बारीक, minute, fact means reality. आपको reality भी मिलेगी, बहुत बारीक reality मिलेगी, और फैंसी एंड इमेजिनेशन कल्पना भी मिलेगी. ऑब्जर्वेशन, पोइट कितना ऑब्जर्व करता है, हाउ माइन्यूटली ही ऑब्जर्व्स नेचर, यू विल सी इन दिस पोएम. वन क्रिटिक says about Robert Frost, he says, the name of the critic is C.D. Lewis. He feels that this poem is an example of the characteristics of Frost's poetry. Frost की जो पोइट्री की जो भी फीचर्स हैं, जो भी विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस पोएम में आपको सब मिलेंगे. You will get all the characteristics of Robert Frost's poetry in this very poem, that is Birches. Frost's poetry contains typically American scenes of nature, which form a vast, endearing playground for the poet's fancy and imagination. So, अमेरिका की जो scenic beauty है, natural beauty है, you will see in this poem through the poet's imagination. Frost has remained very close to north of Boston and Hampshire. तो ये उसका एरिया रहा है, बड़ा क्लोज रहा है वो अमेरिका में, नॉर्थ ऑफ बोस्टन एंड हैम्पशायर. Next, Robert Frost once defined poetry as saying one thing and meaning another. His poems have layers of meaning. कि उसने पोइट्री को डिफाइन किया कि कहना एक बात और उसका मीनिंग दूसरा. यानी कि ऑन सरफेस लेवल रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम्स are very simple, but
On the deep level, his poems are very deep, very hidden. They have hidden quality. Deep level, they have very deep meaning, you can say. So layers of meanings. His poems have layers of meanings. एक लेयर के बाद दूसरी लेयर. देखने में ऐसे लगेगा कि ये तो सिंपल सी पोएम है. Stopping by woods on a snowy evening, in which he says, woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. So you must have read this poem, I think. So sleep here means death, कि पोइट को मरने से पहले बहुत से काम करने हैं जो ट्रैवलर है. तो इसी तरह से in this way his other poems are also very simple on surface level, but they are very deep, they have very deep meaning. Okay. Poet Robert Frost is not an escapist. Escapist होता है कि बचना, सच्चाई से बचना. But he is a realist. He is a practical and pragmatic. He is very wise and practical person. Most of his poems begin in delight and end in wisdom. This is a quotation. His poems begin in delight. Delight means happiness, and end in wisdom. बहुत ऐसे लाइट मूड में और खुशी से वो स्टार्ट करता है और एंड में एक बहुत इंटेलिजेंट बात कहा जाता है, विजडम शो कर देता है अपनी. ही ऑफन बिगिंस विद द प्रेजेंट मोमेंट विच इज़ देन यूज्ड एज एन एजेंट टू प्रोजेक्ट द पास्ट इनटू द फ्यूचर. सो प्रेजेंट मोमेंट से वो स्टार्ट करता है और इस बात को एज एन एजेंट यूज़ करता है. और फिर क्या करता है वो, व्हाट डज ही डू? ही बिगिंस विद द प्रेजेंट मोमेंट विच इज़ देन यूज्ड एज एन एजेंट टू प्रोजेक्ट द पास्ट. और उस प्रेजेंट मोमेंट के थ्रू वो पास्ट को प्रोजेक्ट करता है. प्रोजेक्ट द पास्ट इनटू द फ्यूचर. सो द पोएट रिमेंबर्स विस्टफुली दैट ही हैड ऑल्सो बीन अ स्विंगर ऑफ बर्चेस. तो वो ऐसा उसे याद आता है, ही इज़ रिमाइंडेड ऑफ दैट कि वो बर्चिस जो है, इट्स अ नेम ऑफ ट्री. बर्चिस क्या है? एक पेड़ का नाम है. जैसे बहुत आपने ऐसे थिक ओल्ड ट्री देखा होगा, जैसे बैनियन ट्री होता है, तो उस पर बच्चे जो हैं, चिल्ड्रन जो हैं, स्विंग करते हैं, झूला झूलते हैं. Yes, the poet remembers that he had also been a swinger of birches. तो उन बर्चिस को देखते हैं तो उसे याद आता है कि वो भी इन पेड़ों पर झूला झूला करता था. He was a swinger of birches. So I quote 2 lines and you must learn and quote this in your question. So was I once myself a swinger of birches, and so I dream of going back to be. कहते हैं मैं कभी हुआ करता था स्विंगर ऑफ बर्चेस, और अभी वो ड्रीम करता है कि वो वापस उसी दुनिया में चला जाए. ही वांटेड वंस अगेन टू बी अ स्विंगर ऑफ बर्चेस. फिर से वो चाइल्डहुड में जाना चाहता है. ठीक है. सो द पोएम बर्चेस इज रिमार्केबल फॉर इट्स स्किलफुल ब्लेंडिंग ऑफ फैक्ट एंड फैंसी, ऑब्जर्वेशन एंड इमेजिनेशन. The poet would never like to leave this earth permanently after a momentary climb to heaven. He would like to return to it. Very beautiful lines. Let us understand. Poets जैसे हम स्विंगिंग करते हैं, झूला झूलते तो पहले जो मोशन होता है ऊपर की तरफ जाता है, जैसे लगता है जैसे स्काई को टच कर जाएगा. ठीक है, हेवन की तरफ. फिर जो है वो नीचे की तरफ आता है, अर्थ की तरफ. तो पोएट जो है, जो ऊपर क्लाइंबिंग अप जो है, वो पोएट डजंट वांट टू रिमेन ऑलवेज रिमेन टू स्काई और हेवन. उधर ही नहीं रहना चाहता. ही वांट्स टू हैव टच विद द अर्थ. ज़मीन से जुड़ा रहना चाहता है. ठीक है. सो ही डजंट वांट टू लीव दिस अर्थ. इस अर्थ को छोड़ना नहीं चाहता परमानेंटली. तो 1 मिनट के लिए जब झूला ऊपर जाएगा, स्विंग ऊपर जाएगा, तो हमें ऐसे लगता है कि हम बिल्कुल स्काई में चले गए हैं, हेवन को टच कर रहे हैं. तो
मोमेंट्री, थोड़ी मोमेंट के लिए तो अच्छा लगेगा वहाँ पर, बट ही वुड लाइक टू रिटर्न टू इट, वो वापस आना चाहेगा. सो अगेन आई रीड quotation. Earth is the right place for love. I do not know where it is likely to go better. कि अर्थ ही सही जगह है यहाँ रहने के लिए, लव के लिए. मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि इससे बेटर और कोई प्लेस होगा. सो अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव. आई डोंट नो वेयर इट इज़ लाइकली टू गो बेटर. अनकोट. So, Frost believes that man should arrange his life in such a manner that he should attain a balance between his work on the earth and his spiritual aspiration. कि इंसान को ज़िंदगी ऐसे अरेंज करनी चाहिए कि उसमें एक बैलेंस हो, कि वो अर्थ पर काम भी करता रहे और आध्यात्मिक इच्छा से भी भरा रहे. सो ही वॉन्ट बोथ दीज थिंग्स इन हिज लाइफ. He wants to remain in touch with the earth. He wants to remain loyal to his work, and at the same time, he wants to have spiritual aspiration. It is not desirable to leave the earthly duties completely, nor is it advisable to have no spiritual aspirations and be always pinned down to the earth. So it is not desirable to leave the earthly duties completely. तो ये भी बात सही नहीं है कि हम अपनी ड्यूटीज़ को छोड़ दें, और ये भी एडवाइजेबल नहीं है कि हमारे मन में कोई स्पिरिचुअल एस्पिरेशंस, डिज़ायर्स, इच्छाएं ना हों, एंड और हम बिल्कुल अर्थ के साथ ही चिपके रहें. सो ही डजंट वांट दिस टाइप ऑफ लाइफ. ही वांट्स टू हैव अ बैलेंस बिटवीन बोथ दिस थिंग्स. Read the quotation. I would like to get away from earth a while and then come back to it and begin. कि मैं थोड़ी देर के लिए अर्थ से दूर जाना चाहता हूँ, लेकिन फिर से वापस आकर अपने काम शुरू करना चाहता हूँ. So I would like to get away from earth a while and then come back to it and begin. Unquote. Begin over. So Robert Frost held it as a poetic principle that a poem begins in delight and ends in wisdom. Frost's rich and ripe wisdom is evident in the poem Birches. So you can clearly see how rich, how ripe his wisdom is. The poem is remarkable for the series of word pictures in it. In this poem you will see pictorial quality. ऐसे लगेगा आपकी आंखों के सामने एक पिक्चर बन रही है. Somebody is swinging and he's going upwards, then he's coming down, and you must have maybe you would be reminded of your childhood scene. You will see yourself swinging like a child, going up and coming down. So such type of quality is known as pictorial quality. In simple words you can say word pictures. So there is a striking picture of man and nature. तो आपको फ्रॉस्ट में नेचर भी मिलेगी और ह्यूमन बींग्स भी मिलेंगे. द इमेजेस यूज्ड इन द पोएम आर अप्रोप्रिएट एंड करेक्टली सर्व द पर्पसेस ऑफ द पोइट. बहुत बढ़िया इमेजेस यूज हुई हैं. द फर्स्ट एंड द मोस्ट ऑब्वियस क्वालिटी ऑफ फ्रॉस्ट्स पोइट्री इज सिंप्लिसिटी ऑफ थॉट एंड क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन. तो बहुत इसके थॉट्स बड़े सिंपल हैं, एंड देयर इज़ क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन बहुत क्लियर है. In simple words, you can say there is simplicity and clarity. His poems are very simple and clear, very easy to understand, but they have very deep meaning. So he uses very simple words, mostly monosyllabic and of common day use. He is concerned with the rhythms, cadences, and tones of human speech. He uses a simple colloquial diction. उसका स्टाइल, उसका डिक्शन जो है colloquial means conversational. ऐसे लगता है हमसे कोई बात ही कर रहा है. He is talking to us. He is conversing to us. He is having a conversation with us. So Frost's apparent simplicity is very deceptive. देखने में पोएम सिंपल लगती है, लेकिन बाद में ऐसे लगता है बड़े ये तो डिसेप्टिव है, धोखा देने वाली है. इट मीन्स बहुत ही डीप है. सो लाइक ऑल आर्ट, it involves sifting, selecting,
and ordering of material in quest of perfection. तो एक अच्छे आर्टिस्ट की तरह वो वर्ड्स को सिर्फ चुनता है, चूज़ करता है, सिलेक्ट करता है, फिर उनको ऑर्डर में रखता है और परफेक्शन तक ले जाता है. सो सिंपल टेक्सचर of his verse has within it layers of meanings. His imagery is drawn from common and familiar objects of nature. तो रूटीन के वर्ड्स ही यूज़ करता है, वो रूटीन के ऑब्जेक्ट्स यूज़ करता है. इट अचीव्स न्यू डायमेंशंस as it is used symbolically. Frost's simple language is highly suggestive. Many of his finest lyrics are written in the manner of the metaphysical poet of the 17th century. Frost juxtaposes the opposites of life and effort is made to reconcile or harmonize them. The poet, like the birch swinger, वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करता है? बर्च स्विंगर की तरह, ठीक है, जो बर्च नाम के ट्री पर स्विंगिंग कर रहा है. ही वॉन्ट्स टू क्लाइम मोमेंटरली टुवर्ड्स हेवन, थोड़ी देर के लिए स्काई की तरफ जाना चाहता है. बट सून ही वुड डिप डाउन एंड कम टू अर्थ अगेन, फिर से वो नीचे अर्थ को टच करना चाहता है. Once again I read the quotation. I would like to get away from earth a while and then come back to it and begin over, unquote. So Frost's poem generally combines statement and analogy, metaphor, implication, symbolism भी मिलेगा, metaphor भी मिलेगा, implication भी मिलेगी, comparison, contrast भी मिलेगा. Current situations are made to suggest eternal and universal meaning. तो present की situation लेकर वो उसमें universal message देता है. So to conclude, the language of the poem is simple. There is a minute description of nature. The poem ends on an epigrammatic tone. For example, earth is the right place for love. So these 3 or 4 quotations you can learn. Thank you. So we were discussing Robert Frost, who is an American poet. So another poem is After Apple Picking. After Apple Picking is one of the greatest of nature lyrics in English poetry. It fully brings out the poet's sensuous enjoyment of scenes, sights, sounds and scents of nature. Yes, you understand we have 5 senses. So he presents the beauty of nature through his all senses. Sensuous enjoyment of scenes. He enjoys the scene of apple picking. He enjoys the sight of apple picking. He enjoys the sounds of nature and scents, fragrance of nature. खुशबू enjoy करता है, नज़ारे enjoy करता है. So it is a reverie or monologue of an exhausted apple picker. Apple picker जो भी एप्पल तोड़ने का काम करता है, जो एक लेबर है, हार्ड लेबर करता है, हम कड़ी मेहनत करता है, एप्पल पिकिंग करता है. तो उसका एक ये मोनोलॉग है, वो अपने आप से बातें करता है जब व्हेन ही इज़ एग्जॉस्टेड मीन्स व्हेन ही इज़ टायर्ड आफ्टर पिकिंग एप्पल्स. तो यू कैन इमेजिन, यू मस्ट हैव सीन सच पीपल हु, जैसे हमारे पंजाब में लोग कनक वगैरह इकट्ठी करते हैं, तो एट द at evening time they are very much exhausted. So Frost's poetry, again I repeat some lines of you can write these lines in every question. His poetry contains typically American scenes of nature which form a vast loving playground for the poet's fancy and imagination. Frost has remained very close to north of Boston and Hampshire. So he once defined poetry as saying one thing and meaning another. His poems have layers of meaning. On surface level they are very simple, and deep level they have hidden meaning. So After Apple Picking is a great nature lyric. It fully brings out the poet's sensuous enjoyment of the scenes and sights, sounds and scents of nature. The poem provides a fine example of the union of opposites of fact and fancy. तो इसकी पोइट्री में आपको reality और imagination दोनों मिलेंगे. The apple picker in the poem dreams of the labor and activity necessary to sustain life. तो वो सपने, थक जाता है तो सो जाता है, तो वो सपने लेता है.
कि कैसे उसे लेबर मेहनत करनी पड़ती है जो कि जीने के लिए ज़रूरी है, विच इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ, वन हैज़ टू वर्क हार्ड। फ्रॉस्ट वंस डिफाइंड पोइट्री एज वर्ड्स दैट हैव बिकम डीड्स। तो एक बार उसने पोइट्री को डिफ़ाइन किया था कि शब्द ऐसे होते हैं जो कि काम बन जाते हैं, दैट हैव एक्शन का वो फॉर्म ले लेते हैं, दैट हैव बिकम डीड्स, दैट हैव बिकम एक्शन। The end of the labor leaves the speaker with a sense of completion and fulfillment। कि जो एप्पल पिकर है तो when his work is complete, when he has picked apples, when his basket is full, so he feels a very a kind of satisfaction, a kind of completion, a kind of fulfillment, कि उसे बहुत satisfaction होती है अपना काम करके। The theme thus turns out to be ripeness is all। तो इसका थीम क्या है? ripeness is all, कि जब इंसान पूरी तरह से राइप मैच्योर हो जाता है, वाइज उसमें विजडम आ जाती है, वही सब कुछ है। आई कोट, बट आई एम डन विद एप्पल पिकिंग नाउ, कि मैं अब एप्पल पिकिंग से करके थक चुका हूँ, मेरा काम पूरा हो गया है। एसेंस ऑफ विंटर स्लीप इज़ ऑन द नाइट, कि अब विंटर सीजन है तो मुझे अब सोना है। आई वॉन्ट टू स्लीप, आई एम टायर्ड, द सेंट ऑफ एप्पल्स, आई एम ड्राउजिंग ऑफ। तो उसे खुशबू आ रही है एप्पल की, एप्पल पिकिंग के बाद एप्पल की खुशबू चारों तरफ फैली हुई है ऑर्चर्ड्स में, और वो ड्राउजिंग उसे, जैसे आपने नाइटिंगेल में पढ़ा था पॉपी सीड से स्लीपीनेस आती है, ड्राउजीनेस आती है, इन द सेम वे इन दिस पोएम ही फील्स ड्राउजी, ही इज एग्जॉस्टेड, ही वांट्स टू स्लीप। The apple picker feels that too much of apple picking has tired and exhausted him। उसे लगता है कि इतने ज़्यादा एप्पल तोड़ लिए हैं और वो इतना थक चुका है और एग्जॉस्ट हो गया पूरी तरह से। इवन विश फुलफिलमेंट कैन हैव नेगेटिव इफेक्ट, कि अब उसकी कोई इच्छा नहीं है कि उसको क्या रिवॉर्ड मिलेगा, बस वो सोना चाहता है। जस्ट वॉन्ट्स टू स्लीप, enjoys sleep after doing hard labor। He himself had desired for a bumper harvest, and when it was fulfilled he feels tired। कि पहले उसको इच्छा थी कि मुझे बहुत ज़्यादा हार्वेस्ट मिलेगी, और जब ये इच्छा पूरी हो जाती है तो वो थक जाता है। owing to too much of apple picking, कि इतना ज़्यादा उसने एप्पल पिक कर लिए कि बस टू मच हो गई है। सो आई कोट, for I have had too much of apple picking, I am overtired of the great harvest I myself desired। कि जितनी मैंने इच्छा की थी उससे ज़्यादा काम कर लिया है तो मैं थक गया हूँ। I am tired, I am exhausted, so he just wants to, he is feeling drowsy and wants to sleep। So the poet expresses the conflict which everyone feels between the demands of practical life with its obligations to others and the desire to escape into a land of reverie। So poet जो है एक कॉन्फ्लिक्ट एक्सप्रेस करता है कि जो हर इंसान फील करता है। एक तो प्रैक्टिकल लाइफ की डिमांड्स होती हैं और ऑब्लिगेशंस होती हैं, हमें अपनी ड्यूटीज़ पूरी करनी होती हैं, और एक मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाओ। डिज़ायर टू एस्केप इनटू लैंड ऑफ रेवरी, इमेजिनेशन में, ड्रीम्स में। सो बट एवरीवन हैज़ टू मेक अ बैलेंस, कि वी हैव टू वर्क हार्ड, we have to earn livelihood, and for some time we enjoy dreaminess, and we want to be lost in imagination। So Frost's poems offer much more than the surface meaning। He says one thing and means another। He gives in many of his poems a universal significance to the New England landscape and the Yankee peasant character। So thus After Apple Picking is one of those poems which present a rare blend of simplicity and symbolism and fact and fancy। तो इस poem में आपको क्या मिलेगा? Blend means mixture of simplicity, you will find symbols, you will find reality, you will find imagination, you will enjoy pleasures of nature through your eyes, through your nose, you will enjoy fragrance of apples, and you will feel also drowsy, and you will understand the feeling of working hard and enjoying sleep after day's labor। So this was his poem After Apple Picking। So we have done two poems, Birches and After Apple Picking।
and the road not taken you have read, I think, in your graduation. Stopping by Woods is also another poem. So 2 poems we have completed of your syllabus. Thank you so much.